and 2A. And there is a judgment on this that I wish to cite, my lord. No, just a minute. Express authorization under Article 10A, right to fair trial. And Article 2A. Objective resolution. No, and Article 2A. Ji. So is it your case, now these are, as the very appellations A indicate, that these were not there in the Constitution as originally enacted. Entry 55 has never been touched. It remains as it is. So is it your case that prior to these articles being added to the Constitution, the answer would go the other way? Let's look at the Constitution on the commencing day. Sir, if suppose on that day or the next day, Parliament had made this law with regard to the right of appeal, there was no 10A then, there was no 2A then, what would you say, what would the answer be? My answer is, and the question I think is connected to the larger question, that 185 में अपील जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो कर दी. अगर उन्होंने नहीं दी है 184(3) में, too bad, go back, make a constitutional amendment. That is the argument, right? My contention on that is that the parliament said, yes, हम 184 में अभी नहीं दे रहे, but हम ये power दे रहे हैं legislature को कि entry 55 में हम डाल रहे हैं कि you can extend your jurisdiction if at a later stage. The word used is not extension. The word Extend. used is enlargement. Enlarge the jurisdiction. Now, yes. how do you interpret the word enlargement? As I see it, enlargement is of something which already exists. There is no appeal which exists. So how can it be enlarged? Mr. Zaid, there could be two interpretations to that. I mean, my loud thinking that enlargement in this entry would have two sets. One is the existing jurisdiction being enlarged. The other is creating a totally new jurisdiction. Still, the Supreme Court's jurisdiction gets enlarged. So it doesn't really matter. The express provision is required for the existing provisions, but for a new jurisdiction, you don't need any. And when you have two fair interpretations possible, which one do you go to? You go to the one where the law will survive. दो चीजें हैं ना, creating and in creating you are enlarging. Where is the part to create a new jurisdiction? So that is where enlargement would come in. Most respectfully, sir. Yeah, agar if we give enlargement a restrictive meaning, then can you give me an example when is it ever applicable then? Sir, I mean, I can't think of a scenario. Maybe you can help me think of a scenario. If we give it a restrictive meaning, the enlargement is different from creation of jurisdiction. Then where will it come into play when, let's say, this act did not exist and I asked you, please enlarge the Supreme Court's jurisdiction, what would you do? It's a matter of semantics. You see, I mean, it's just a word in the sense that suppose if there is an appeal provided, would you not say that the jurisdiction of the Supreme Court stands enlarged? So it's just a word, I mean, to be, and you've read the principles, widest possible interpretation. So it cannot be lost in the word. Enlargement of jurisdiction can be read with Article 175(2) or not, because it is a case of jurisdiction. No court has any jurisdiction unless conferred by the Constitution, by or under the law. So if you read the enlargement, is it not the appellate forum is not an enlargement of jurisdiction to the original jurisdiction of Article 184(3)? Indeed it is. So it would be read with Article 175(2) or not, where the powers have been given. Yes, certainly. But the law, but the law over there would have to be a law that Parliament is capable of making. Which brings us back to the same question. What will go back to the same? But you see, enlargement का तो example 185 में ही दिया हुआ है, और वो जो आपके वो थे tribal areas की enlargement, वो act का नाम ही था enlargement of jurisdiction. लेकिन आपसे तो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका मुझे बताइए ना, आपने अभी 10A और 2A का जिक्र किया है, तो I'm giving you an चीज और है example. इसमें जाहिद साहब, मिस्टर जाहिद, उसके अंदर आप सुन लें, फिर मैं आपको एक और चीज उसी के जवाब में बता जो है एक बात आप कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के पास शुरू से ही पावर था, उन्होंने कहा जब हमारी मर्जी होगी हम लॉ बना देंगे. इज दिस योर आर्गुमेंट? पार्लियामेंट ने उस वक्त नहीं बनाया लॉ, ठीक है, नहीं बनाया, but you say that inherent in entry 55 is the power to create an appellate right of appeal in respect to 184(3). Is this your argument? Absolutely. Yes.
Okay. My lord, Now, appeal, is it a procedural matter or is it a substantive right? it's definitely a substantive right. It is a It is, substantive. yes. Learned counsel. So you Learned can create a substantive right by implication. Not by implication. I'm Learned not counsel. creating it by implication. I am saying that the injunctions of Islam mandate that you cannot deny right of appeal. Learned counsel. And the Honorable Supreme Court of Pakistan says that this is what the injunctions of Islam say. Which case is that? Which case is that? Trying to get to that PLD 1989 Supreme Court 6. But the Honorable Supreme Court, page 6. Honorable Supreme Court also says that the lawmaker, if he intended to the constitution makers or framers of the constitution, if they had intended to provide an appeal, they would have done so. And if they by intention did not do so, and 185 comes after 184, then be it so. I mean, if they did not provide an appeal and now the Constituent Assembly wants to provide an appeal, let it do so. But let it be by way of a constitutional amendment. My and lord, not by another way of looking at by stretching entry 55 out of shape. My lord, another way of looking at it, if we look at 184.3, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, right? Later on it started, and that is the reason that the parliament कब इस्तेमाल होना शुरू हो गया? किस आप बताइए ना जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था? Make your point. I'm trying तो चलिए आगे बढ़िए ना. Learned counsel. जरा आप चलते रहे ना, थोड़े आर्गुमेंट्स आपके हम नोट कर लें पहले. राइट साहब, प्लीज आर्गुमेंट्स को बताएं. If I may, Zahid Saab, as I've understood your argument, welcome to the full court. entry 55 is very crucial. It gives competence to the parliament in two ways. One is enlarging the jurisdiction. The jurisdiction which already exists, its enlargement of that. And secondly is to confer supplemental powers. That is in the context of the existing jurisdiction. So, any jurisdiction that exists that can be enlarged. It is not a creation of a new jurisdiction. And it is the existing jurisdiction which is being enlarged. It is unlike Article 185, where the original jurisdiction is of the high courts of other forums. It's only the appellate jurisdiction that has been created and vested in this court. Secondly, coming back to the question, why was there a need? If as interpreted by this court till 1988, if 184.3 had been exercised the powers the way that originally were intended by the framers of the constitution makers, there wouldn't have been a problem. The problem started after 2010, when everyone was speaking about it. The voices came from the lawyers, from everywhere, that the power was being abused, and we need to acknowledge that. So now, in that historical context, merely the jurisdiction has been enlarged. Indeed, sir. In fact, well, the first case that happened under 184.3 was in 1976. but the floodgates opened later. उसके बाद 184.3 has been exercised, yes, progressively, but then the law developed. Yes, of course it did. So, if I may just come to page 12. निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए तमाम मतलूबा वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद में मुआवनत करेंगे। दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में अशाया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम आया। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दिसंबर तक अच्छी खबर मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू।
निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से नए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, पाक बहरिया से मुतालिक पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की नेवल चीफ को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी, कोशिश करेंगे कि वकील अपने दलाइल आज ही मुकम्मल कर लें, आज ही केस खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क्स। हुकूमत की काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानब गामजन है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 1 रुपए और 29 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए और 40 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 278 रुपए और 50 पैसे पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 156 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 47,600 से जायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। अफगानिस्तान के सूबा हरात में ज़िलज़िले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी, जहां बहक अफराद की तादाद 2400 से तजावुज़ कर गई। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़िलज़िले पर इज़हार अफसोस, मुश्किल की इस घड़ी में हम अफगान अवाम के साथ हैं। NDMA को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की फराहमी की हिदायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, डेडलाइन में 22 रोज बाकी। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 48 खानदान वतन वापस जा चुके। अपने मुल्क वापसी पर हम मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन। पाकिस्तान के सूबा हिरात में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, जहाँ बहक अफराद की तादाद 2400 से तजावुज़ कर गई। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस, मुश्किल की इस घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं। NDMA को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की फराहमी की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का छठा मैच हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने 34वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना लिए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.